अस्सलाम वालेकुम। अभी 5 मिनट में वेबिनार स्टार्ट होगा, जो कि आज 8 लेक्चर हैं। और ये पहला लेक्चर है जो कि KGSP के बारे में है। इसके अलावा जिस्ट के बारे में लेक्चर है, यूएसटी के स्कॉलरशिप्स के बारे में लेक्चर है। और ये जितने भी आज जो लेक्चर देने हैं वो सारे के सारे अवॉर्डीज हैं जिन्हें ग्रांट हुआ था स्कॉलरशिप KGSP, जिस्ट या यूएसटी। और अभी ऑलमोस्ट इन 5 और 6 मिनट ये लेक्चर स्टार्ट होगा। और अगले लेक्चर भी इस तरह टाइम के अंदर 3-4 मिनट डिले या जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ा सा लंबा लेक्चर है। इसके बाद सारे 1-1 घंटे के। बस, और अगर आप अपने पहले टेस्ट कर लें, अगर आपके स्पीड सही ना आ रही हो तो ये आप लोगों का जिम्मा है। हमारी तरफ से हुआ तो हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ये है कि अपने लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे अगर विंडो आ रही है तो वहाँ ऑडियो इज ट्रांसफर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे टैब्स हैं कुछ बने हुए, मेरे ख्याल में फुल स्क्रीन होगा, स्क्रीन शॉट होगा, और इस तरह करके एक ऑडियो इज ट्रांसफर्ड, तो उसको ऑफ कर दें ताकि थोड़ा बैंडविड्थ आपको बेहतर मिल जाए। और इसके अलावा लिंक्स शेयर कर दें हम अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा लोग अटेंड कर सकें। आप सबको आवाज़ तो आ रही है ना? सही है। बस अभी ये 3 मिनट 3-4 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर। और ये लेक्चर आज जो लेक्चर है सारे सारे कोरियन स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि कोरियन स्कॉलरशिप्स की डेट आई नहीं है, डेडलाइन है, वो आप पूछ सकते हैं। और सवाल इस तरह होंगे कि अभी जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो लेक्चर ख़त्म, पीपीटी प्रेजेंटेशन के बाद आप सवाल लिख सकते हैं चैट विंडो में। और चैट विंडो में फिर आपने चैटिंग स्टार्ट करनी। जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा फिर सवाल के जवाब दिए जाएंगे। जिसका सवाल सबसे ऊपर होगा उसका पहले दिया जाएगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद सवाल करेगा वो। तो इस वजह से आप लोगों ने बिल्कुल ये चैट बॉक्स को चैटिंग के लिए नहीं यूज़ करना। जस्ट सवाल पूछें, आप लिखते रहें साथ साथ, और एंड पे सवालों के ही जवाब दिए जाएंगे। मेन मकसद यही है। लेक्चर एग्जैक्टली 1-2 मिनट में स्टार्ट होगा। और हमारे प्रेजेंटर सदफ हैं, जो कि लास्ट ईयर KGSP जी में मिला था, और ये अभी अपना तारुफ खुद भी करवाएंगे। तो तरीका यही होगा कि आप क्वेश्चन जो हैं वो एंड पे पूछ सकते हैं। अभी आप प्रेजेंटेशन सुनेंगे जो कि छोटी सी प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज सारे सारे लेक्चर्स कोरियन स्कॉलरशिप्स के हैं, और 8 लेक्चर हैं, उन सब के रिस्पेक्टिव लिंक्स देख लें।
जो लिंक है उस पर अगर आप रजिस्टर भी करना चाहें कर सकते हैं, वरना विदाउट रजिस्ट्रेशन जो सेकंड लिंक है हर वेबिनार पे उस पर आप कर सकते हैं। इसको शेयर कर दें इवेंट को ज़्यादा खुद। और इसके अलावा ये है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ऑडियो इज ट्रांसफर्ड आ रहा है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिल जाए। और अगर आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा मेरी है तो आप अपना नहीं मेरी तो आप अपना ब्राउज़र रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सदफ हमारे साथ हैं। तो ये लास्ट ईयर KGSP इन्हें मिला था, इसके अलावा ये तभी टेक स्कॉलरशिप की भी एक फाइनलिस्ट थी। लेकिन आज जो लेक्चर ये देंगी ये KGSP के बारे में। और सदफ मैं आपसे कहूँ कि आप लेक्चर स्टार्ट करें अपना, मैं अपनी वॉइस वगैरह ऑफ कर लूँगा और फिर आप स्टार्ट ले। थैंक यू। Hello. Hello, Samsung. I'm Sadaf Gulshad from Pakistan. I'm Sadaf Gulshad from Pakistan. I was selected as KGSP grantee in 2014 for master's scholarship, and I applied through university. So this time I will be giving you suggestions regarding how to apply for KGSP through university, and so I will introduce my background a little bit, that I did my electrical computer engineering from Comtech, and then I applied for different scholarships, and I got the QBTEC and with KGSP. So I selected KGSP for Masters in Electrical Engineering from KICE. So I will try my best to give suggestions to you people so that more people can get this scholarship. So moving to the next slide. First of all, I will introduce what KGSP is and who grants it. And basically, KGSP is a Korean government scholarship. So it is organized by a Korean government organization named as National Institute of International Education. They provide you funds. Everything is arranged by this organization. And the brief introduction regarding to this scholarship, I will be giving that this scholarship is not only for masters. I will be explaining for masters because I applied for masters and I was selected for it, but this scholarship is also for bachelor's and doctoral studies. Basically, the application for bachelor's and master's is separate, but master's and doctoral is combined. But the other candidate will be explaining to you how to apply for doctoral and what are the tips and tricks to get the doctoral scholarship. But I will be explaining only master's. And if you want to know more about the bachelor's, master's, and doctoral studies, like how much the stipend is, how long it is, then you can follow the link I have given below. And over there, they have given all the information related to others. I will be explaining only masters through university. Moving to the next slide. First of all, I will be explaining how long the master's scholarship is. Basically, this KGSP differs from other scholarships in one way that it has a language course also. Basically, for the first 1 year, they will teach you Korean language, and for the remaining 2 years, you will be doing masters in your major. But this 1 year of Korean language, it can be exempted if you have the topic level 5. Basically, what topic is? Topic is a Korean language course like English language, Korean language tests like English language test, IELTS and TOEFL. But usually, if you have level 5 or level 6, then you are exempted from this 1 year of Korean language course. But usually, we Pakistanis don't have this level because it's a high level.
topic have 6 levels, and level 1, level 2, they are basic levels, and level 5 and 6, they are high levels. So usually we Pakistanis study this, all the this 1 year for Korean language. And another important thing is this, where do we study this Korean language and who funds for this? After selection, first of all, they will NIIED designate a different university in a different city, basically in a different province. They send to you to a different university selected by them, and in that university you study Korean language, and after studying Korean language you have to appear for topic for 2 times. They give you options of 2 times. Otherwise you can appear for topic level, topic in different many times, but the thing is NIID will fund the topic test fee only for 2 times. So, and at the end of year, you have to attain level 3, which is the middle level. Like in 6 levels, you have to at least attain 3. If you will not get level 3 at the end of 1 year, they will you can extend your language study to 6 months more and then get level 3. Even then, if you cannot get level 3, then your scholarship will be cancelled. But the point here is that only this language span can be extended, not your major studies. And like in masters, if your thesis is not complete in 2 years, that time cannot be extended. That scholarship cannot be extended. Only this topic scholarship can be extended. Topic time will be extended. Moving to the next slide. Okay. First of all, I will be discussing what is the eligibility criteria for applying for masters in KGSP. You should, if you are applying in 2015, then you should have your degree till 31st of August. If you will not be able to provide your degree till 31st of August, then your scholarship will be cancelled. Okay. And the second eligibility criteria is that you should be having at least 2.64 CGPA and 80% in marks. Then they will consider your application, otherwise they will not. And the candidates who are preferred while checking their application are basically those, as in every scholarship, the language certificates matter. English language certificate or Korean language certificate. Even if you don't have Korean language certificate, it's okay if you only have English language certificate, like TOEFL, IELTS. It will make your application strong, and they will also prefer the students from natural sciences and technology programs like engineering and those. So, basically, there are 2 methods for applying for KGSP master's program, and this basically differs from other scholarships. That there are 2 methods for applying in this scholarship. One is by embassy, the Korean embassy in Pakistan. You can apply through embassy, and by university, the Korean university. Um, but there is one condition, that you can apply by only one way. If you will apply by both ways, then you will be disqualified. So first, decide which way is better for you. I will be comparing both ways, and then you can decide which way is better for you. And then I will be explaining about how to apply by university, but the other candidates will be explaining how to apply by embassy. So listen both the lectures and decide which one is better for you. Comparison between if you apply by university and by embassy. If you apply by university, then the benefit is that the number of seats are 8,
but in battery the number of seats are 5. And keep this thing in mind that this 8 and 5 seats are not only for the masters. These are also for PhD. PhD is included. For application for masters and PhD is together, but the bachelor's is different. The time period is different and subject procedure. So these seats are for PhD and masters both. Okay, and while university, there is another condition. First, I explained that there was a condition that you can apply only through university or only through industry. Then in university, there is another condition that there are many universities in South Korea, and but you can apply through only one university. You don't have option that you can apply through different universities for this scholarship. You can apply only through one university. If you will apply through more universities, you will be disqualified. But for embassy, you have benefits that you will be given option to apply in 3 universities. Like you can apply first in the high-ranking university, second medium, and the third in the lower university. If you are not selected in one, it might be possible you will be selected in second and then third. Okay, and but another benefit with university is that there are only 2 selection stages. First, university will give you admission and recommend you to NIIED, the organization which grants scholarship. But while embassy, first embassy will ask you, they will clear you, they will take interviews and that stuff, and then then NIIED will give you scholarship, and then they will send you your documents to these universities. So by embassy there are 3 stages, and by university only university and NIIED. But the thing is that you can apply only in one university, and so you have to decide this on your own that which one is better for you, and also while applying through university, you have only the option of one university. So this first think and decide in which university you apply, your admission will be uh, you will be able to get the admission, and because there is the option of only one university, and the first aim is that you get admission in the university, and then the university should recommend you to NIIED for the scholarship. So, and application deadlines, basically for masters and PhD, the application deadlines varies from the start of February, almost 2nd of February, to the end of March or the mid of March every year, once in a year. And within this time limit, every university and industry have different deadlines. So you will have to check the university in which you want to apply. You will have to check the website of that university. That what are the time limits for application. So applying for university in Korea, there are many universities. So and every university is not under this program. This year there are totally 66 universities under this program. So you have to first select in which university you have to apply, and only one university, and check its deadlines and application procedure. Like along with deadlines, the application procedure might also differ from university to university. Like previous year, I applied to 5. They also demanded the application form which is given by NIIED, but they also demanded that we should apply first online, and then we can get the print of that application and then by mail along with the other documents which are required by NIIED. As basically the
aim of the steps for applying by universities: first get admission in university, and then get scholarship from NIIED. So you have to first fulfill the requirements of university, what university is demanding, and then the remaining, the second step is NIIED or scholarship. So you have to fulfill their requirements, and as application process. Okay, I have explained this point already, and there is another important thing, that there might be specific programs under this scholarship by universities. This year, on KGSP website, I have provided the link in next slide. They have provided a document. In that document, they have written the names of every university and which program is under that program, that this scholarship in that university. So you have to check that and then apply in that department or that major. So, and another thing is that there might be some specific requirements by your university. Usually, this KGSP, they don't, NIIED, they don't demand for English proficiency test. But as I already told you, that the main aim is that you should get admission first in university, so you have to fulfill the requirements of the university. Like some universities require English proficiency test, so you have to provide that. Otherwise, if someone don't require, then you don't need to provide it. Okay, another thing which I noticed is that in KGSP, NILD application forms, they require only one recommendation letter. But usually universities require two recommendation letters. So, and NILD usually recommends that if your university requires two recommendation letters, then provide two recommendation letters, because if it's required for the admission, so they will give you first admission and then recommend to us according to our criteria. So you should first get admission. For that purpose, you need to provide them two recommendation letters. And for recommendation letters, KGSP has specific format of recommendation letters. And another thing which differs for this KGSP recommendation letter is that they said that you should. एक्सक्यूज मी सदफ सदफ एक मिनट आप अपनी वॉइस ज़रा चेक करेंगे दोबारा, मतलब अगर हैंड फ्री लगाए हैं तो उनको ज़रा टेस्ट कर लें, ये वॉइस डिस्टॉर्शन कर रही है आपकी थोड़ी सी। थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करें। जी जी, थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करें ताकि डिस्टॉर्शन, और अगर हैंड फ्रीज लगाए हुए आपने तो इट्स ओके। तो हैंड फ्रीज है, ठीक है, बस थोड़ा ऊंचा बोल, अब थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करें और बस ठीक है मेरा ख्याल, ठीक है ना? ओके, आप स्टार्ट कर। जी। For the recommendation letters, KGSP I was talking about, they have specific format. You have to give that specific format printed on a paper to your professor or anyone from whom you want to get recommendation letter, and get it filled. And the difference here is that they have demanded that you should provide this recommendation letter in the sealed form, like it should be sealed in the envelope of that university in which you studied. It should be in the envelope of that university. The logo should be on that envelope, and it should be signed by the recommender, the one who recommended. Basically, if it is from your professor or PhD, then it's more better. But
if one recommendation letter is from lecturer and one from professor, then it's okay. But it's recommended usually that it should be from PhD. So, and another thing that in this KGSP application, they usually require that their requirement is that one original document and 3 extra copies you should send them in print. But by original, they mean that the attested one. And attested, it's not mandatory that they should be attested by HEC. If they are attested by notary office, even then it's okay. So one copy of attested and the remaining 3 photocopies. And as far as recommendation letters are concerned, as recommendation letter is already sealed, you cannot get its photocopy, so leave it as it is. They will photocopy it on their own. And the last and most important thing that before applying for this scholarship, you should be having the acceptance letter from the professor of that university or not. Basically, if you have the acceptance letter, then it makes your application strong. But if you don't have it, you can even apply because it's master's degree and you can get admission. As if I discuss my experience, then I didn't get any acceptance letter from any professor, but I got admission. But if you have acceptance letter from a professor, that will make your application strong for admission. As your first aim for this scholarship is to, through university, is to get admission in the university, and you will be, if you will have contact with the professor, then you will be clear about your research. As in this year, they have NIIED have included another application form. With in that form, you have to clearly give the research proposal. Like it should be, they have demanded that you should give the title of research, how long it will take, what will be the methods applied, and what will be the benefits of this research. So in order to be clear for that, in order to write, fill that application form, if you have contact with the professor, then it will be better. And it will make your application strong. And this link which I have provided, this link, this is the link to the application form of this KGSP program and all the information related to it. So you can check it. This is for this year application program, application form. Okay. Now I will, as I already explained, that there are 2 steps for selection through university in this scholarship. First, university will grant you admission, and first of all, they will check their own criteria. What are the criteria for granting admission in that university or that department? When you will be granted admission in the university, then according to the selection criteria, I will be explaining it later. Selection criteria of NIIED, they will recommend you to the NIIED. And another thing is that don't confuse this admission with the regular admission of university. Basically, if you get admission through this scholarship application, every university has separate application time and application procedure for this scholarship and for the regular admission. So if you get admission through this scholarship, but you don't get a scholarship from NIIED, you will not be granted admission. That admission cannot be considered normal admission. So the thing is, don't confuse it with that. But if you have contact with the professor, then later you can ask your professor that I didn't get the scholarship, but if you can grant me funds, then I can join, and then you can apply for the admission again. But this admission
is different from the usual admission of the university. So don't confuse it with that. And the second step, after getting recommendations from all the 66 universities, NIIED will select the candidates from all the recommended candidates from these universities. And as you already know, the seats for university recommendation is 8 seats. So the competition is really high. So from 66 universities, they will get recommendation and select overall 8 students. So moving towards the next. Yeah. Now I will be explaining the selection criteria of NIIED, how they select. Basically, after getting admission in the university and recommendation from the university, they will the final selection will be done by NIIED, and they will select that whom they should provide scholarships. Like other scholarships, all the documents, including transcripts, your scores, grades, it will be obviously considered. So try to improve your grades. And the second thing which is, and it's important, the self-introduction. Self-introduction is basically personal statement and letter of motivation. And in KGSP application form, they have asked some specific questions for self-introduction. So it's not mandatory to write more than one page. If you want to, you can. But the questions which they have asked for self-introduction, you should definitely answer at least all those questions. And the next one is study plan. You have to give study plan and research proposal. Basically, for research proposal, I already told you that they have demanded the specific, the concrete ideas on which topic you will be doing research, for how long, what will be the benefits. So you should be clear about that. And if you have already contacted the professor, or you know about the labs and the research being done in that university, that department, then you can write that research proposal more clearly. And again, the language proficiency certificates will be considered while selecting. Uh, Usually, we don't, Pakistanis, we don't know the Korean language, so don't consider that certificate, but do consider these English language certificates. You will, they will definitely count. Even if your university don't require, but while getting scholarships by NIIED, they will definitely consider it. So this will make your application strong as compared to the other candidates if you have English language certificate. And then comes the recommendation letters. If you have good recommendation letters, then obviously, and at the end, the published papers and awards published. If you have in the application form of KGSP, they ask you to write the names of two. If you have two published papers, then at maximum two, write the names of two, and you have to also send the photocopies of those papers, and they will count definitely. And awards, like you got some awards where they have also asked for at least 2 awards if you have, and then you have to send the photocopies of those awards. So then now we will be moving towards the questions, and I will say that keep trying, and the more you try, the more you get experience, and if you can, until or unless you will not try, you cannot. From my personal experience, I didn't get the scholarship. Like I applied and I got it. It took me almost 7 to 8 months to get scholarship. At the start, I got rejections, but with the passage of time, I kept on improving my profile, like getting English certificates, doing research, and those sorts of stuff. So
keep improving your profile and keep trying. That way you can get the scholarship. Now moving towards the question section. If anyone have questions, they can ask in chat. जी, आप अपने क्वेश्चंस चैट विंडो में लिख सकते हैं और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा फिर। अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिखते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चंस वो पढ़ते रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देती रहेंगी जिस तरह क्वेश्चन आता रहेगा। और जी जी सदफ, आप दे सकते हैं जो आप शुरू से देख लें जिसका आया है फहद के बाद जिसका क्वेश्चन फर्स्ट है और लेक्चर स्लाइड्स के बाद आप क्वेश्चन फुल पढ़ के, ताकि अगर किसी और का भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसका भी साथ साथ आंसर हो जाए और फिर आप दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मुख्तार अहमद साहब ने सवाल किया, आई डिडंट हैव रिसर्च पेपर बट आई हैव वन प्रोविजनल पेटेंट. It's okay, you can write about that and it will help you. Research paper is not necessary but there are, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास रिसर्च पेपर्स नहीं है लेकिन वो सिलेक्ट हुए हैं. तो रिसर्च पेपर कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना देता है. और नेक्स्ट मोहम्मद इलियास, इस रिसर्च पेपर नेसेसरी नहीं, रिसर्च पेपर नेसेसरी नहीं है. अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, बट अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके. Is IELTS compulsory or English proficiency is okay? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. लाइक उसका अगर हाई रैंक यूनिवर्सिटीज हैं तो वो डिमांड करेंगी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो, तो फिर वहाँ पे तो आपको देनी पड़ेगी. लेकिन आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. अगर उन्हें इंग्लिश आइल्स ज़रूरी नहीं है तो वो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी KGSP के लिए आई डोंट थिंक सो. इफ यू डोंट हैव आइल्स इट्स ओके. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ना भी दें तो इट्स ओके. What is the procedure for applying for embassy in Pakistan? वो आप नेक्स्ट लेक्चर सुन सकते हैं. जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो आपको आके बता देंगे कि किस तरह से एम्बेसी के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है. आइल्स रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देगी. अदरवाइज इस स्कॉलरशिप के लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है. Sayyid Abdul Salam, is this for PhD as well? Yes, ये PhD के लिए भी है. PhD के लिए भी है और मास्टर्स के लिए भी है. और फॉर PhD फर्दर लेक्चर दूसरे कैंडिडेट आपको देंगे कि उन्होंने किस तरह से अप्लाई किया था. आल्दो अप्लाइंग प्रोसीजर सेम है, लेकिन PhD के लिए आपको रिसर्च आइडियाज कंप्लीट होने चाहिए. Yes, NIID through embassy 8 candidates को select करेगी from Pakistan. How much is stipend? Basically आप उस लिंक में भी जाके चेक कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता देती हूँ. It's 9 lakh Korean won per month and almost in Pakistani rupees if you convert it becomes almost 86,000 rupees.
and it's more than enough. काफी होता है कोरिया में सर्वाइवल के लिए. If the CGPA is lower than the required threshold, then one shouldn't apply for this. जी, अगर CGPA लो है तो फिर उन्होंने बेसिकली वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगर आपका उस थ्रेशोल्ड से बिलो है CGPA तो फिर आप अप्लाई करेंगे भी तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी. I have got acceptance letter from Inha University, LIT recommended by NIED. आप अप्लाई कर दें थ्रू KGSP और फिर इट डिपेंड्स इन NIED आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट करेगी और अगर आप एलिजिबल हुए तो डेफिनेटली वो आपको स्कॉलरशिप देगी, लेकिन आपको अप्लाई थ्रू KGSP करना होगा. What is the procedure for acceptance letter? Acceptance letter का प्रोसीजर यूजुअली पहले भी बताया जा चुका है. बाकी ये है कि आप अपने मेजर से रिलेटेड प्रोफेसर को उस यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करें और उनसे उन्हें अपनी प्रीवियस रिसर्च के बारे में बताएं और उनसे जो है एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें, या एटलीस्ट आप वो प्रोफेसर एग्री हो कि वो आपको ले लेगा तो आप देन थ्रू दिस स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो आपका एडमिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आर मैंडेटरी और नॉट. ओके, ये डिपेंड करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. फॉर दिस स्कॉलरशिप इट्स नॉट मैंडेटरी. स्कॉलरशिप के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी क्या लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बगैर एडमिशन देगी. जैसा कि मैं एक और कैंडिडेट से बात कर रही थी, उसने कहा कि वो हानयंग में अप्लाई कर रही है विदाउट लैंग्वेज सर्टिफिकेट. बट साइट की वेबसाइट में चेक कर रही थी तो वहाँ पे जो है लिखा हुआ था कि आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो. तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है. रिसर्च पेपर रिक्वायर्ड आफ्टर BS. अगर आपके पास रिसर्च पेपर है तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट अप्लाई. कैन यू प्लीज गाइड हाउ टू फाइंड हिज article of concern professor, as I have checked a lot but cannot find any one of it. किस तरह से आर्टिकल्स को ढूंढा जा सकता है? आप बेसिकली फर्स्ट प्रोफेसर की वेबसाइट से डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके प्रोफेसर चेक करें. उनके मोस्टली जो है वो रिसर्च पेपर्स दिए हुए होते हैं एंड रिसर्च पेपर्स के नेम दिए हुए होते हैं. आप उस रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करके और उसको पढ़ सकते हैं. बाकी इस बारे में आपको ज़्यादा गाइड PhD के लिए जो लेक्चर होगा वो कर देंगे. If someone don't have language certificate, I already told that it depends from university to university. यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिपेंड करता है कि जो है आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए. अगर एक यूनिवर्सिटी को नहीं रिक्वायर है तो फिर इस स्कॉलरशिप की कंडीशन नहीं है कि आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट ज़रूर हो. ओके, प्लीज गाइड इन डिटेल अबाउट स्टडी प्लान. स्टडी प्लान में बेसिकली उन्होंने जो क्वेश्चन इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उन्होंने पूछे हुए हैं, आप वो क्वेश्चन क्लियरली आंसर कर दें तो वो एनफ है. बाकी उन्होंने आपको ये बताना होगा कि आपने पहले क्या पढ़ा, फिर अभी आप फर्दर क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं, एंड देन फ्यूचर प्लान्स भी हैं कि आप यहाँ पे कोरिया में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका कोरिया के अंदर ही क्या स्टडी प्लान्स होंगे या फिर आप किसी और कंट्री में जाके क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं. तो आप स्टडी प्लान बेसिकली इसी तरह से है जैसे कि मोटिवेशनल लेटर होता है. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट समथिंग.
डिपेंड्स यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, बट यूजुअली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उन्होंने बेसिकली इसके एप्लीकेशन फॉर्म में और जो इंस्ट्रक्शंस हैं KGSP की, उसमें उन्होंने सिर्फ आइल्स और टॉफल का जिक्र किया हुआ है। तो ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से है, आई डोंट थिंक सो कि ये मैटर करेगा। ये सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये तो लिखा हुआ है कि जो है they have mentioned in guidelines that English certificate is not necessary for applying, but preference will be given to candidates with certificate. I have read in Seoul National University, they don't have this requirement. What is their recommendation? Basically, Seoul National University high ranked university है और उनके पास ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आएंगी जिनके पास ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होगा। तो और जितने लोगों को मैं यहाँ जानती हूँ जिन्होंने सोल नेशनल में जाना है, उनके पास ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट था, तो उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये रेकमेंड करूँगी कि विदाउट लैंग्वेज सर्टिफिकेट सोल नेशनल यूनिवर्सिटी को प्रेफर ना किया जाए। बाकी also depends on luck, but in Seoul National, it's preferred that you have English language certificate. Is it okay to contact multiple professors from different labs in one university or department? जी, it's okay to contact multiple professors, लेकिन ये जरूर है कि जो है इस तरह से ना किया जाए कि आपने पहले एक प्रोफेसर को कांटेक्ट करें, उसके रिप्लाई का वेट करें, अगर नहीं आता तो फिर आप दूसरे प्रोफेसर को कांटेक्ट करें। एट द सेम टाइम it can apply, but आप इस तरह भी नहीं कर सकते हो कि आपने एक प्रोफेसर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन आपको जब दूसरे प्रोफेसर से बेटर ऑफर आई तो आपने चेंज कर लिया। I have not prepared any such proposal yet. It is necessary to write. ये necessary है क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म में रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आपको रिसर्च प्रपोजल तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इतने कंक्रीट आइडियाज नहीं है तो जस्ट बेसिक आइडियाज इन वन लाइन आप दे दें कि बेसिकली आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, और ये आप उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जिन चीज़ों पे रिसर्च हो रही है उससे रिलेटेड भी आप दे सकते हैं। I'm confused with percentage and CGPA. I got 73.96 rated. Percentage that is almost equal to 3.2. Not mentioned on my degree, but for KGSP they are 2.8 or 85%. So can I apply for it? बेसिकली उन्होंने KGSP की जो एप्लीकेशन गाइडलाइन है उसके एंड पे उन्होंने टेबल दिया हुआ है GPA कन्वर्जन का, तो आप उस टेबल से कन्वर्ट करके देख लें। तो अगर आप बेसिकली अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट से ओनली परसेंटेज गिवन है और GPA नहीं है तो फिर तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि परसेंटेज जो है वो इस तरह से होनी चाहिए और GPA इस तरह। बट आप जो उन्होंने एंटी टेबल दिया हुआ है ना कन्वर्जन टेबल, आप उसमें चेक कर लें। अगर आपकी परसेंटेज इतनी बन रही हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। How much minimum time is required to send documents to Korean University by post? मिनिमम टाइम ये डिपेंड करता है आप भेज किस जरिए से रहे हैं। बेसिकली अगर आप पाकिस्तान पोस्ट से भेजेंगे तो 2 वीक्स लग जाते हैं,
और अगर CCS वगैरह करेंगे तो फिर उसमें कम टाइम लगता है, विद इन 1 वीक जो है वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, लेकिन आप जितने जल्दी हो सके भेज दें। अगर आपका CGP आपके ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा हुआ है तो इट्स ओके, 3.4 इज एनफ, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट 2.6 है। For English proficiency, can we provide the medium of instruction certificate from my previous institution? ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो, लेकिन जो है अगर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है तो फिर बेशक आप दे दें। Generally, I will not it. Okay. You are applying for as Ms. Sadaf said to help her bit out, generally IELTS is not required by NIRED, but some universities must ask for it, so you need to check the specific university you are applying for, but it's always good to have IELTS or any other English course. Yeah. Right. What is the role of prospective supervisor in KGSP application? Should he include his remarks letter in application? प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर का रोल KGSP में ये है कि वो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने में हेल्प करेगा। बेसिकली अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होगा देन यूनिवर्सिटी आपको रेकमेंड करेगी नेक्स्ट NIID के लिए फॉर स्कॉलरशिप। तो प्रोफेसर का रोल सिर्फ यहाँ तक होता है कि वो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा देता है। और to be included is not in letter and application, नहीं, इसकी एप्लीकेशन में उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं की है कि जो NIID की एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी कि आप प्रोफेसर का लेटर भी अटैच करें, बट जब आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में जाएगी तो वहाँ पे आपको एडमिशन दिलवाने में सुपरवाइजर हेल्प करेगा। और अगर आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते तो आप सुपरवाइजर से को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं कि अगर वो आपको अपनी फंडिंग से स्कॉलरशिप दे दे। Did you have acceptance letter from any professor? नहीं, मेरे पास कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था किसी प्रोफेसर से। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। I did my graduation in microbiology and my CGPA is 3.57. Can I eligible for applying it? I don't have any language certificate or I'm not Korean. जी आप कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए आपको चेक करना होगा जितनी भी ये 66 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में किस किस यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी ऑफर हो रही है, और फिर आप इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन चेक करके सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। I can understand that. My CGPA is 3.81. Field is geoscience. I will have IELTS result by 28th February, but I don't have any results or research proposal. Do I need to prepare one before trying to contact any professor? किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करने से पहले ऑब्वियसली आपके पास कुछ आइडिया तो होना चाहिए। आप बेशक कंक्रीट आइडिया ना हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपने आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट क्या थे, और देन ही कोई प्रोफेसर आपकी एप्लीकेशन आपकी ईमेल को कंसिडर करेगा। अदरवाइज जो है वो आप जस्ट डायरेक्ट ईमेल कर देंगे तो वो मैटर नहीं करेगा। आपको चाहिए कि प्रोफेसर सर्च करके उसकी प्रोफाइल को थॉरोली स्टडी करें और फिर जो है प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करें। Recommendation letter from last attended professors. जी
लास्ट अटेंडेड प्रोफेसर यूजुअली तो लिए जाते हैं, लेकिन बात तो इस तरह से होता है कि उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले एजुकेशन फिनिश की होती है, उसके बाद जो है वो किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये बेटर है कि आप प्रीवियस अटेंडेड प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर दें। इज इट रिकमेंडेशन लेटर एक्सेप्टेड फ्रॉम लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी लेक्चर rather than प्रोफेसर? एक्सेप्टेड तो होते हैं, लेकिन ये है कि अगर प्रोफेसर से लिया जाए तो ज्यादा आपकी एप्लीकेशन को फॉर्म बनाता है। कैन वी अप्लाई फ्रॉम बोथ कोटा? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ या तो एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी से, और इन यूनिवर्सिटी आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों से अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी से भी और एम्बेसी से भी, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। It is said that recommendation letter must be from PhD teachers. Is it necessary to have recommendation letters from only PhD? नहीं, नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो बेटर है। Is it true I cannot apply for KGSP if I was issued B2 visa? I was an exchange student for 1 semester in Korea. Basically, in that frequently asked questions, they have answered this question. If you have been in Korea, then at B2 visa, then you can only apply by embassy, not through university. Even after, if you got KGSP once and you have to apply, you want to apply again, then you can only apply through embassy, not through university. And for one. Actress one. In worst case, if you do not have English proficiency scores and you want to apply for SNU, so then make English proficiency certificate from your previous school and mention that your medium of instruction was totally English. Yes. And how much time should we wait patiently for reply of any individual professor? What's the Korean culture about it? And it depends from professor to professor. Sometimes professors reply you urgently, and sometimes it takes time. This thing that PhD candidate can explain you more better. There are people who got replies within a day, and some people get reply, कुछ लोगों को reply आता है एक week में भी आ जाता है, depend करता है. So it means I can look at research topics available with professor or university and select one of them, but do I need to tell them what methodology will I take? I mean, I need to tell them how will I perform research in detail. इसमें ये है कि आप अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो आप जस्ट बट आपको मेथोडोलॉजी देनी पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में ये पूछा गया है कि मेथोडोलॉजी दें, बट आप जस्ट नॉट कंक्रीट बट रफ आइडिया आप दे सकते हैं. I have 87% according to my university, but according to application form, my percentage is 85%. So what should I do? आपको कन्वर्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म वाले टेबल के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके लिखनी पड़ेगी जो फाइनल है. Someone will apply for KGSP if she had already enrolled in any Korean university. Already enrolled in any Korean university, then उसको बेसिकली उन्होंने जो आंसर किया हुआ है वो ये है कि already enrolled in Korean universities, and basically KGSP का एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसीजर और ऑलरेडी enrolled जो है वो डिफर करता है. एडमिशन प्रोसीजर ही टोटली डिफरेंट है, आपको सेपरेटली एडमिशन लेना पड़ता है. तो अगर आप ये चाहते हैं कि उसी सेम एडमिशन को कन्वर्ट कर दिया जाए KGSP में, तो ये नहीं हो सकता.
somewhere I can find the 56 university list. Wait, I have provided you. स्लाइड नंबर 8 के एंड पे जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप इस लिंक पे जाएं और इस लिंक से आप डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर सब कुछ दिया हुआ है। तो उसमें 66 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी है और उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप के अंदर आ रहे हैं वो भी लिस्ट गिवन है। Mansoor, we cannot say exactly how long they take to reply, but Korean professors do not reply that easily. So once you send a detailed email with your specifications, keep sending very gentle reminders after every few days. That would help you. If I apply through low-rank university, can it cause any problem to be selected for KGSP, or preference will be given to high-rank university students? एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन गाइडलाइंस हैं उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी या इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। बेसिकली ओवरऑल वो ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स 66 यूनिवर्सिटीज से रेकमेंड होंगे, वो जो है आपको वो ओवरऑल उन 66 यूनिवर्सिटीज से रिकमेंडेड सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इवेलुएट करेंगे और जिसकी प्रोफाइल बेटर होगी उसी को स्कॉलरशिप देंगे। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है कि लो रैंक यूनिवर्सिटी है तो उसको ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं देंगे। Please explain how should we write self-introduction, your course of life means future and after scholarship. बेसिकली कोर्स ऑफ लाइफ में आपने बताना है कि आपने पहले लाइफ में क्या किया और इस स्कॉलरशिप के थ्रू ये आप ये तालीम हासिल करने के बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप फ्यूचर में PhD करना चाहते हैं, कोरिया ही से करना चाहते हैं या किसी और कंट्री से आपने आगे जॉब करनी है? आपको ये सारे प्लान्स देने हैं। How to find a supervisor? Basically, how to find a supervisor is that कि आपने जो है अपने से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाना है और फिर उनकी फैकल्टी चेक करनी है कि आपके जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड इस डिपार्टमेंट में कौन सा सुपरवाइजर जो है वो काम कर रहा है और फिर वेबसाइट पे आप उसकी रिसर्च को पढ़ें और वेबसाइट पे दिया हुआ होता है सुपरवाइजर का ईमेल एड्रेस, तो आप थ्रू email से contact कर सकते हैं। If you are already enrolled in any scholarship program in Korea, NIIED does not accept you. I have one SNU professor, very senior at first. He accepted me, but later, after some mails, he has not replied yet. I request you to look at conversation which I can send you. Tell me how should I send and guide me what should be my next step. क्वेश्चन का आंसर आपको जाहिर सेंड दे देंगे। If one have studied from non-PhD teachers in bachelor's, then what does he do? It's okay. आप non-PhD का recommendation letter देना चाहते हैं, it's okay, आप दे दें। Explain also for how to apply PhD program. PhD program application procedure तो सेम ही है, लेकिन इसकी आपको further explanation further next lecture में आपको दे दी जाएगी। What is your personal recommendation for Pakistani students they apply by university or embassy? और पाकिस्तानी स्टूडेंट अब ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ यूनिवर्सिटी से अप्लाई करें या सिर्फ एम्बेसी से अप्लाई करें, बट आप एम्बेसी वाला लेक्चर भी सुनिएगा और थ्रू यूनिवर्सिटी भी। बाकी ये है कि थ्रू यूनिवर्सिटी फीस ज़्यादा है, बट थ्रू एम्बेसी
आपको एम्बेसी से भी इंटरव्यूज को क्लियर करना होता है। देन बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स हैं और यूनिवर्सिटी में आपको डिपेंड, आपको जस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और देन NIID में आपको स्कॉलरशिप ट्रांस करना है। तो आप सेकेंड लेक्चर भी सुन के जो आपको बेटर लगे आप डिसाइड कर सकते हैं। At Mumbai, you can find university list on NIID's website. From where to get application form. स्लाइड नंबर 8 पे मैंने एप्लीकेशन जो लिंक दिया हुआ है उस वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। माय क्वेश्चन इज व्हाट प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन यू सजेस्ट टू एम्बेसी और यूनिवर्सिटी। ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये आप पे डिपेंड करता है। आप यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी और एम्बेसी दोनों का लेक्चर आपने सुनने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मेथड बेटर है। After bachelor studies, we don't have such like research proposals. So in case of contacting supervisor, what I will provide them. आप सुपरवाइजर को कांटेक्ट करते हुए आपको रिसर्च प्रपोजल की कंक्रीट रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रीवियस बैकग्राउंड डिस्क्राइब करें और अपना इंटरेस्ट शो करें कि मैं इस चीज़ में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर को उसके रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके। I would like to clarify, so if I was an exchange student before, I still can apply for KGSP, but it have to be through embassy, right? या through embassy अगर होगा तो आप कर सकते हैं। Are you already studying in SMU? What is the profile of any students admitted at SMU under KGSP? No, I'm not studying in, मैं SMU में नहीं हूँ, लेकिन दूसरे कैंडिडेट जो SMU में है वो आपको रिप्लाई कर देंगे। Please, madam, it will be easy if you take person name and question then answer. Kashif Ahmed question किया है, as Rizwan said that we don't have any research except our one final year project. So what should we do in that case? आप उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अपने जो स्टडी प्लान है उसमें मेंशन कर सकते हैं और उसी से आप नेक्स्ट अपना रिसर्च प्रपोजल भी बना सकते हैं कि मैं इसी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को फर्दर इस फील्ड में जो है वो एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो आपको ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उस केस में हेल्प कर सकता है। आप अपने जो स्टडी प्लान लिखेंगे उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। I'm searching for MS admission. Do I need to provide a letter for recommendation? Supervisor letter for recommendation जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो आप एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। चलिए ठीक है। अब हम मेरे ख्याल में हमें ये सेशन हम रोकना चाहेंगे ताकि हम दूसरी प्रिपेयर हों, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का था। इसके बाद हम बाकी सेशन करना चाहेंगे और क्या कहते हैं, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन। और आप सबके सब एग्जैक्ट 1 घंटे बाद अगले जो 7 सेशंस रिमेनिंग हैं उनमें आ सकते हैं, जिस तरह के जिस्ट का होगा इसके बाद जो कि साथ देंगे। उसके बाद आगे आप शेड्यूल दे सकते हैं। KGSP के भी आगे आ रहे हैं और भी ये लेक्चर इस वजह से एक ही टॉपिक पे इतने ज़्यादा हैं ताकि आप सारे के सारे जो हर एक कैंडिडेट का अपना आइडिया है, जो हर कैंडिडेट ने जिसने अप्लाई किया है तो उसका आप आइडिया हासिल कर सकें और फिर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ जिस भी तरीके से आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि सब कुछ मिलेगा आपको, वीडियो भी, रिकॉर्डिंग भी, और इसके अलावा प्रेजेंटेशन भी 2-3 रोज बाद ग्रुप के ऊपर लिंक्स अपलोड किए जाएंगे, आप डाउनलोड। तो इस वजह से इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, ना आप ये सवाल आए कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा थैंक यू सदफ सो मच, आपने लेक्चर दिया, क्वाइट इंफॉर्मेटिव था और होपफुली हम नेक्स्ट ईयर भी ये चाहेंगे कि आप लेक्चर दें ताकि
लोग एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें KGSP के स्पेशली। और इसके अलावा जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्यूरीज के आंसर देने का। जाहिद हुसैन का लेक्चर हमने रखवाना था, लेकिन शेड्यूल इस तरह सेट था कि हम बिल्कुल नहीं उसको अकोमोडेट कर सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और अभी आगे लेक्चर आ रहे हैं, जो भी लिंक्स हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे स्टे ट्यून्ड रहें और लिंक्स को तैयार रखें। और क्योंकि अब आगे लेक्चर्स बहुत छोटे हैं, इस वजह से क्वेश्चन आंसरिंग तेज जारी होगी, तो आप लोग इन लाइन रहिएगा, सिंक्रोनाइज रहिएगा इसके साथ जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, सदफ, आप कोई एंडिंग रिमार्क देना चाहें, फिर हम ये क्लोज कर देंगे स्टेटमेंट। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कीप ट्राइंग, आप कोशिश करते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इंशाल्लाह फिर आपसे 10 बजे जो नेक्स्ट लेक्चर है उस पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।